have Mohsin Raza's reaction coming in where he says that this is a verdict for the Muslim candidates, I believe. Let's listen to that reaction. देखिए, जाहिर सी बात है, आपने देखा कि बड़ी तादाद में निकाय चुनाव में मुस्लिम समाज को टिकट देकर हमने ये एक बात साफ कर दी है कि जैसे आप भी लोग उठाते थे सवाल कि क्या मुसलमानों को आप चुनाव नहीं लड़ाना चाहते, जो लड़ने में सक्षम है और जिसने अप्लाई किया है और वहां से जो रिपोर्ट आई है संगठन के लोगों ने जो नीचे से रिपोर्ट दी ऊपर और उसके तहत उनको टिकट दिए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी तादाद में वो जीत कर भी आएंगे, क्योंकि अब एक जो दौर था वो बदल चुका है। क्योंकि विपक्ष भ्रमित करता था कि भाजपा को वोट न दीजिए, भाजपा आपकी विरोधी है। अगर विरोधी है तो आपने क्या किया था? 4-4 बार सत्ता आपने बनाई थी, 3 बार बहन जी ने बनाई थी, आप लोग 4 और 3 7 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। कांग्रेस 30 साल तक लगातार उत्तर प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री देती रही, तो आपने तो कभी उनको आच्छादित किया नहीं। Mr. Rajiv Pratap Rudy of the BJP is joining us live now. Encouraging results from Uttar Pradesh. You would be hoping that in time, not this year, but in time, Mr. Rudy, you are able to get the same kind of double engine in Karnataka as well, of the kind that you have in Uttar Pradesh. Hi, Madhav, and hi, Padmaja. Yes, politics is all about situations in different places at different times. Some brings us cheers, some brings us sorrow, and it goes on. But at the end of the day, Karnataka is, of course, as it looks from the figure, the regional politics overshadowed anything to do with the BJP at the national level. And that possibly is what we never work on. We work for the state and the center to work together. And the national projection goes to the state, and the state projection comes up to the national level. And it's been working fine in many of the states. Wherever this aberration happens, and then there is an issue which comes up because of leadership or certain areas we need to improve, certain areas which we have done extremely well, you tend to lose. All these this will ultimately be analyzed when we come back on the desk to discuss all these things. But on the other hand, if you see that same situation, where Mr. Adityanath is there and the central government is there, is doing phenomenally. So the combination is what matters. And if the combination is in a straight line, it gives a very positive effect. But if there are aberrations in that, there is a problem. So I'm happy that at least at this point of time, you are talking about, none of the channels as of now are talking about the Uttar Pradesh polls, and the phenomenal victory which is predicted and is visible there now is something which is also an eye-opener for all the states which work with the BJP and have the BJP-ruled states. So I think it's this contrast in itself, and education is in itself a great analysis of what is happening in the country as far as politics is concerned. And regionalism, when it has an impact on national politics, the results are very different. And you know, this is also, yes, JVC. So what is going to happen in UP, to what I can see, is the complete meltdown of BSP is going to move certainly Jata voters into BJP. They're not going to go anywhere. And Yadavs also went for Modi ji in 2019. So at the moment, UP, actually more Jatavs than Yadavs. Yeah. In so 2019 results, there were more Jatavs, more non-Jatav Dalits voting for the BJP. Yes. Now non-Yadav OBCs. Yeah, and non-Yadav OBCs, exactly. So now Yadav's also significant portion will come. Jatav also will come. As a result, I think 76 plus is what you can look for out of 80 in Uttar Pradesh in 2024. You know, let's just talk for a bit about the leadership style. Mr. Rajgopalan and Mr. Sanjay Jha, let's talk about the leadership style of Yogi Adityanath. Ashutosh ji said, I don't agree with him, but he's made the message very clear. Look at the kind of seats which are being polled on today. One, the municipal polls are happening on the backdrop of the encounter of Asad Ahmed and, you know, Atiq Ahmed being convicted, etc. Where Yogi Adityanath went to Chakia and he said कि यहाँ दंगे होते थे, यहाँ माफिया होते थे, अब यहाँ पे महोत्सव होते हैं. Second, the bypoll which is happening for Lok Sabha in Uttar Pradesh is Suar. Why was that necessitated? Because Abdullah Azam finally got convicted and then he was disqualified. Azam Khan, when he was campaigning for the Samajwadi Party for these bypolls, he said कि अब हमें तो रगड़ के ही रख दिया है, अब बस क्या करना है, गोली मार दो हमें आकर के. So people who used to run riots, Sanjay Jha, earlier, under earlier governments, are today in a position where Yogi Adityanath is saying, boss, I am the person who calls the shots in this state. And people seem to be responding to it. Padmaja, I have a simple answer to that. Nobody's going to deny that Uttar Pradesh has suffered from lawlessness for a long time. But, you know, it swung between two pendulums. On the one hand, you had that acquisition of a Gunda Raj kind of a culture. On the other hand, you have something equally reprehensible
in the bulldozer politics of Mr. Adityanath. I mean, no matter what he claims about cleaning up crime and, the mafia rule, the use of extrajudicial authority is frankly a vicious anti-democratic stance for any political party to endorse. Sorry. Just 1 minute, just 1 minute. My second point was what Mr. Rudy mentioned. He talked about the fact that, our strategy to make Karnataka benefit from the BJP's national image didn't work. Well, there's a message there. It hasn't worked in Himachal Pradesh. And it hasn't worked in Karnataka, 2 states that the Congress is winning from the BJP. And look at the manifesto of the BJP closely. Whatever they said, the Congress talked about welfare, guarantees, we'll talk about, we'll stay away from Karnataka for the next 10 minutes because we want to focus on Uttar Pradesh. I promise you, we will go back. We will go back to Karnataka with Mr. Rudy and with you, Dr. Sumansi Raman. Let Mr. Rajgopalan respond to you. And also, it's interesting you talk about the bulldozer because you know what Yogi did? When he went to Prayagraj to campaign, on the day that he went there, on the very spot where Atiq Ahmed's properties were brought down, 75 houses for below poverty line families were made. So he's turned it into a bulldozer Robin Hood. I will bulldoze the rich to give houses to the poor. Mr. Rajgopalan. Yogi Adityanath has brought a branding style of bulldozer, mitti mein mila dunga, this type of destruction activities. But I would also say that Yogi Adityanath's brand image in other parts of the country, apart from Uttar Pradesh, is also for construction of Ram Mandir. Therefore, he goes by destructions as well as construction. Therefore, his image is intact. He is not. And very interesting, very interesting. Akhilesh Yadav has tweeted. I just want to read out. 1 second. I just want to read out Akhilesh's tweet. Akhilesh has tweeted on Karnataka. He says, Karnataka से संदेश है कि भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक भ्रष्टाचारी अवनोन्मुखी महिला युवा विरोधी समाज बंटवारे वाली झूठे प्रचार वाली व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है. But there is no tweet coming in from the UP. से क्या संदेश है? This is nothing. This is absolutely nothing which mentions or is related to UP at all. Do you find that interesting? In fact, sir, when you see this coming in. Adjectives over here. Nakaratmak, Sampradayak, Bhashtachari. Mr. Shriram, you find this interesting? Must be really But crying. if you look at the figures of the local bodies election, I think BJP should not rejoice because 236, 143 SP, BSP 30, Congress 34 and 43. If you combine all those anti-BJP things, that comes to around more than 200 seats. No, BJP is celebrating too early. What happened? Let me complete. Let me complete. If the BJP has to come back to power in 2024, the BJP has to score out of 70 out of 80. With these figures, can they come? Can yes, they because ultimately the figure that will really matter is the mayoral polls. How many mayors do they manage to get elected? And they've swept the mayoral polls pretty much. 16 out of 18. Only urban. It's only urban. What about the rural? The last time in assembly elections, the BJP has been... Where BJP wins matters. Where opposition wins doesn't matter. That's the bottom line. Okay, let's get the view from Mr. Shriram. You can ask the question. Let Mr. Shriram respond to that. Last time it was said when the BJP won, everybody said BJP has made inroads into the rural hinterlands. BJP has inroads into the most backward and other backward caste. Now, if you are only focusing on the urbans, I belong to the UP and I know 60-70% UP. Okay, Mr. Shriram. Actually, let's try and pull up a comparison. Your response to Ashutosh. Hold on a second. Let's first try and pull up a comparison between the local body elections of last time as compared to this time. Let's pull up those comparisons. Yes, go on. Mr. Shriram. What I want to ask Ms. Sanjay Daya is, at the end of the day, the women in the UP particularly say that my children are able to go and in the evening and come back to home. That's more important. There is no crime there on the road. And that has to be stopped. And the Mulayam Singh Yadav's government, Akhilesh Yadav government, Mayawati's government, everybody turned on Nelson's side towards this crime and mafia. And this was stopped only by Yogi. And Yogi has stopped it. Are you aware of the NCRB data on attacks on women? Okay. Are you aware of the data on attacks on women in Uttar Pradesh by the NCRB? I do have. One second. Which is the state which is the highest? No. See, the point is that, at the end of the day, you can say whatever you want to say. Yogi, everybody said probably that in 2019 with Mahabharata. No, I'm giving a political rhetoric. That political rhetoric is the same, I'm telling you. Okay, I really think we should cut across to our colleagues who are on the ground. I think Tejshri has
people already there reacting to this, at least some cheer for the BJP supporters. आशुतोष भी हमारे साथ हैं, आशुतोष पे भी जाएंगे. Tejshri, first over to you. 129. Well, this is a very interesting thing when it comes to Uttar Pradesh local body polls, that when you cross these counting booths, you see several different parties changing by within few footsteps. So now there was BJP. I walked few steps over here, and this is the BSP, and I have the winning candidate over here. आप कहाँ से पार्षद किस तरह जगह से चुनकर आई? वार्ड नंबर 18 से. तो बहुजन समाज अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ट्रेंड कर रही है, लेकिन BSP की जीत आपके लिए क्या मायने रखती है फिलहाल? BSP की जीत मेरे लिए बहुत बड़ी मायने रखती है. बहन मायावती कुमारी जी की वजह से हम लोग जीत में हैं. उन्हीं की वजह से आज हमें पदवी भी मिली है, और इस पूरे देश का उसका विकास करने का जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है बहन माया कुमारी. 17 में से सिर्फ एक ही है जो BSP अभी फिलहाल लीडिंग में नजर आ रहा है. 17 में से 16 BJP ट्रेंडिंग में है जीत के लिए, और एक जो है वो बहुजन समाजवादी जीत पर है. ये हमारे लिए एक सबसे नंबर 1 के लिए बात है, हमारे अपनी प्राउड फील करने वाली बात है. बहन मायावती की जीत है ये, और इस जीत से मैं ही नहीं, मेरे जितने भी भाई लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जितनी भी मेरे समाज ने मुझे सपोर्ट किया है, उन सबके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ. All right, so you see, this is the बहुजन समाजवादी party's candidate who is leading as of now, and I would like to show you the visuals over here, that these kind of the visuals that we can see. But we have to remember this fact that Uttar Pradesh local body election play a major role in the 2024 election, and that is what several leaders have been saying. Say it be BSP, say it be SP, and say it be Bharatiya Janata Party, and this is a roadmap indeed for the 2024 elections, because you see 80, the largest number of seats for the Lok Sabha election counts here from Uttar Pradesh, that is 80. We'll also try to speak to several candidates who are in the leading trend over here, and from the several counting booths that we are giving you. Just come back to you in a second, Tejshri. आशुतोष, आपने जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, आशुतोष माय कॉलीग ऑन द ग्राउंड, आपने लोकल बॉडी इलेक्शन बहुत क्लोजली ट्रैक किए हैं. यहाँ जो हमारे गेस्ट है वो कह रहे हैं कि 236 अगर बीजेपी का आंकड़ा अभी आ रहा है और 143 समाजवादी पार्टी का आ रहा है, तो इससे खुश होने की बात नहीं है बीजेपी के लिए. क्योंकि और कांग्रेस भी जोड़ ली. हाँ, सिर्फ दो अलग अलग बात करिए कि 236, क्योंकि दिख रहा है कि गांव में उनका समर्थन कम हो रहा है. आपने इसको ट्रैक किया है कई सालों से, क्या ये सच है? क्या ये आंकड़ा और समर्थन कम होता दिख रहा है? देखिए, ये आंकड़ा अभी बहुत ऐसा कम नहीं होता नजर आ रहा है. हालांकि देखिए, पहले से ही जो शहरी मतदाता रहे हैं वो एक तरीके से जो उनका मूड और मिजाज रहता है वो भाजपाई रहता है. और खासतौर से अगर जो बड़े शहर हैं, जैसे जहां पर इस वक्त नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 17 में से जो 16 सीटें हैं वो बीजेपी एक तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है. हालांकि एक सीट है वो बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में जाते दिख रही है, लेकिन 16 सीटें ऐसी जरूर है जहां पर बीजेपी पूरी तरीके से लीड कर रखी है. सिर्फ यही बात नहीं, देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ सालों के दौरान उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्ति की ओर योगी आदित्यनाथ ले जा रहे हैं, उससे जो लोगों के मन में जो एक विश्वास है कानून व्यवस्था को लेकर, वो बहुत तेजी से एक तरीके से रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है. और उसका जो असर है वो चुनाव में भी हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इस चुनाव से उत्तर प्रदेश का जो मूड है वो समझ में आएगा. तो कहीं ना कहीं जो अभी के जो परिणाम है वो उत्तर प्रदेश खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोषजनक हो सकते हैं. हालांकि बहुत अपेक्षित परिणाम की जो उम्मीद योगी आदित्यनाथ शायद कर रहे होंगे उतनी तो नहीं मिली है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्होंने पूरी मेहनत की है, खासतौर से अगर वाराणसी की बात करें तो प्रधानमंत्री के इस संसदीय क्षेत्र के जो बीजेपी का एक मजबूत गढ़ है उसको बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ एक हफ्ते के अंदर उन्होंने 3 दौरे किए लगातार. जो मंत्रिमंडल के लगभग आधा दर्जन से अधिक जो मंत्री हैं वो बनारस में डेरा डाले हुए थे. और न सिर्फ वाराणसी बल्कि आसपास के सभी जिलों की अगर हम बात करें, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे चंदौली हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे गाजीपुर हो, इन सभी जिलों में योगी आदित्यनाथ हो या फिर जो डिप्टी सीएम जो थे वो लगातार दौरे कर रहे थे. और लोगों के बीच में जो कानून व्यवस्था, जिस तरीके से आतिक अहमद की हम बात करें या फिर अशरफ की बात करें या फिर उसके पूरे फैमिली के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, इसके अलावा मुख्तार अंसारी के परिवार के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, उसको
उसको एक तरीके से भुनाने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें कामयाब भी होती हुई दिख रही है। हालांकि कुछ मसले जरूर हैं जिसको लेकर जो अभी ग्रामीण मतदाता हैं वो जरूर नाखुश दिख रहे हैं, खासतौर से महंगाई का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी थोड़ा सा पहले से भी कमजोर रही है। उन इलाकों में बीजेपी अभी उतनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाई है। उसका असर, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी का जो केंद्रीय एक तरीके से जो बड़े जो नेता हैं, खासतौर से जो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का इंपैक्ट रहा है उन क्षेत्रों में, वहां पर अभी जैसे जैसे उनके दौरे होंगे, जैसे जैसे चुनावी जनसभाएं होंगी, तो उत्तर प्रदेश की जो फिजा है कुछ और बदलेगी और बीजेपी को ये उम्मीद है कि 80 में से 70 सीटें वो एक बार फिर से लाएगी। तो लोकल बॉडी का जो ये इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा था और इस सेमीफाइनल में मैं ये कहूंगा कि बीजेपी लगभग जीत की ओर जा रही है और इसका जो असर है वो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जी, Ashutosh, Techri, thank you both for having joined us. We'll keep a close eye when Yogi Adityanath in a while is expected to come to the BJP office.